Rahim. Today is the lecture on creativity. Very good component of entrepreneurship. To be a good entrepreneur, creativity is a process. I mean, if you want to start a business, you want to start one of the product, for example, production is the first step or preliminary step. Refining the product, then rethink, then refine. I mean, creativity continuously is required to sustain your business, to improve your product, to establish your process. I mean, I mean, all this type of the processes will be discussed in today's lecture. So that lecture is taken from Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Chapter 3, page 111 to 129. So ये 19 pages हैं जिनमें से ये लेक्चर लिया गया है. So you can go through और ये सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी जी. Next please. So in this lecture, we will discuss the process of creativity, how to enhance the organizational and individual creativity. Creation, you need some environment, you need some tools, you need some systems, you need some partner, you need some discussion, you need some reading, you need some go through some books. Creativity means to create something new. Creativity means you have to refine, improve, and produce new products or improve the existing product and processes. इसकी शेयरिंग कैसे हो रही है? Okay. So one is creativity, then polishing the creativity, enhancing the creativity. So this can be discussed. So as I discussed already in start, this is creativity is not a word. It is not a word. It is a process. I mean, for this you need be ready for creativity. वो जैसे पुराने शोरा कहते थे कि एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे वो बैठ के शेर लिखते थे, नसर लिखते थे और शेरों की उसको पोइट्री की आमद होती है. तो इट्स typical environment. You must go there. You must sit there. You must make some environment. So preparation, investigation means you know what is the basic. I mean, for example, this is one of the ballpoint. Before create new product, you must have to investigate first this product. Your investigation leads to make your knowledge will be, I mean, that makes you able to learn the basic component of this ballpoint, its structure, its manufacturing process, its strength, its different features in that. Then is the transformation. I mean, after getting complete 100% knowledge of this ballpoint,
Or we have one another product, for example, this is sanitizer, this is squash. So you can make some even other chemicals like this floor cleaning chemical. So to transform this into the new product, you must have the 100% and exact knowledge of first this product. So then you will be able to, when you once have the 100% knowledge of one product, and you have to go through another product, you have to get again knowledge. You have to investigate a third, fourth. When you investigate various products, after this you have some knowledge, you have your own thinking. Now, this is the basic requirement for creativity. Now, after getting knowledge of three products, you will be able to produce the fourth one by transformation, by changing, by adding something new, because you know that what are the characteristics of this floor cleaning chemical, how this will remove the dust, how this will remove the oil, how this is mixed, and how this is utilized. So transformation then is the incubation, and once thing is prepared and this is ready for incubation, and incubation after this is ready to illuminate. Illumination means light. When you attach some tube light somewhere, this is maybe initially an incubation. When you switch it on, this gives you light. So after incubation is commercialization. So illumination means you switch on one bulb, one tube, one light, to switch on second one, third one for the verification. I would like to put one example here. I don't know how many of you आपने साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना कब सीखा, और पहली दफा जब चलाया तो आप में से कोई एक बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? नहीं आएगी? ओके जी, आई गॉट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट interact, your voice cannot be heard. Anyhow, ये मैं जो एग्जाम्पल शेयर करूंगा इससे आपको पता चलेगा कि वेरिफिकेशन क्या होती है। फर्स्ट टाइम जब आप मोटर बाइक या साइकिल चलाते हैं तो आपको आप आके बड़ी हैप्पी से कहते हैं कि जी वो मैंने आधा किलोमीटर साइकिल चलाई आज, या साइकिल तो फर्स्ट टाइम इतनी नहीं चलती, मुश्किल से कोई कह लें कि कोई 20 मीटर चला देगा, 30 मीटर, वो गिर जाता है बंदा उसके बाद। दिस इज इल्यूमिनेशन की लाइट ऑन हुई। वेरिफिकेशन है कि दोबारा आप चढ़ के देखें क्या दोबारा भी आप वो चला पाएंगे उतना। अगर आप सेकंड थर्ड टाइम विद इन ए प्रैक्टिस आप देख लें, वेरीफाई करें कि यस दिस प्रोसेस इज द ऑथेंटिक प्रोसेस, yes you are the expert, yes this product validated, then the implementation is mean you can go for the commercialization. Same अगर एक दफा आप मोटर बाइक चला लें तो आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं बैठेगा इसको नहीं चलाने। जब आप कंट्री एक्सपर्ट हो जाएंगे तो then you mean anybody can get the ride from you. So finally the implementation. So this creativity process in entrepreneurship is actually once this creativity process started तो वो उनको हर चीज में एक चेंज नजर आना शुरू। दिस इज अनफॉर्चुनेट आवर स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएटिविटी में कम तवज्जो देते हैं, क्रिएटिविटी पे कम और कैंटीन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। नाउ व्हाट्स द प्रिपरेशन, मैंने एक ओवरव्यू तो दिया लेकिन थ्योरेटिकली व्हाट इट इज, गेट योर माइंड रेडी फॉर क्रिएटिविटी थिंकिंग।
मीन आप मेंटली तैयार हो कि आप क्रिएटिविटी इस मूड में। लोग कहते हैं कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग किसी खुली जगह पे जाके बैठ के अपना क्रिएटिवनेस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ द लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स। मीन आपने लॉन्गर पॉलिसी के तहत आपने प्रोग्रेसिव यूथ के तहत सोचना है कि आपने ऐसा एटीट्यूड अपनाना है जो सस्टेनेबल और कंटिन्यूस ग्रोथ वाला हो, डेवलपमेंट वाला। जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक नहीं 2-3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे। रीड ए लॉट, नॉट जस्ट योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। आपने अगर ये प्रोडक्ट बनानी है तो इस तरह की 5-10 किताबें, 5-10 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और जो प्रोडक्ट बनी है उनके करेक्टरिस्टिक्स गो थ्रू होने पड़ेंगे। पढ़ने से काफ़ी नहीं होगा, आपको इसको बनाना आना चाहिए, आपको इसकी मिक्सिंग, इसकी मैंने अगर कोई केमिकल प्रोसेस है तो दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड एंड यू मस्ट बी द एक्सपर्ट ऑफ दैट। क्ले पार्टिकल ऑफ इंटरेस्ट टू यू एंड सेव दैम। डेफिनेटली से बात है कि आप सारी चीज़ें किताबों में नहीं, कुछ रिसर्च की चीज़ें मिल जाती हैं, और समटाइम्स यू हैव टू ट्रैवल टू द पर्सन जिसके पास ये नॉलेज है, उसके पास बैठना पड़ेगा, उसका मूड देखना पड़ेगा, उससे टाइम लेना पड़ेगा, सो दैट कि आप उनसे नॉलेज लर्न करें। तो कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है। सो आप यू आर द हंग्री ऑफ स्किल, नॉलेज, एंड यू हैव टू ट्रैवल टू द पर्सन हैविंग दिस नॉलेज। आजकल ये बिल्कुल लुकिंग कि आप इंटरनेट पे लोगों से असाइनमेंट ले लेते हैं, कर लेते हैं। डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स, listen more, read more. This is required for this preparation purpose. Join professionals or trade association and attend their meetings. जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं ऐसे प्रोफेशनल की गैदरिंग्स, एसोसिएशंस, उनकी रजिस्ट्रेशन लेके आप ऐसी जो मीटिंग्स हैं जिसमें ये टेक्निकल डिस्कशंस हों, यू हैव टू गो देयर, और यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। एलिमिनेट क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस। जो ऐसी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं between your learning, which can eliminate, which can decrease your creativity, such distractions को आपने opt नहीं करना, कम करना। Take time to discuss your ideas with others. Sometimes कुछ लोग कहते हैं I have very good ideas, I have marvelous idea, लेकिन it's only with you. Idea has no value until and unless the people don't accept that. Idea has no value until and unless scientific community is not endorsing that. आप कहते हैं मैं बड़ा चैंपियन हूँ, चैंपियन among the people, not alone. So कुछ लोग हैं कि वो अपना आइडिया अपने साथ लेके फौत हो जाते हैं, दुनिया को उसका फायदा नहीं होता। आइडिया वही है जो acceptable in the market. Already I discussed this one. So preparation is necessary. Investigation. So this step requires one to develop a solid understanding of the problem, situation, or the decision at hand. Investigation means you know the basic knowledge and understanding of manufacturing of that or to produce the new product. In this case, on the other case,
if there is some problem, is there some issue in some machines you want to solve, creativeness, you must to understand the situation, and expertise should be that as decision is with you. Sometimes you met some people, you discuss your problem, immediately that expert told you that there is no problem, this that is solved. वो आपको सिंपल एक चीज बताता है कि you have to do that and it's all and problem is solved. But if you don't have knowledge, तो वो नीम हकीम खतराए जान. अगर आप you have less knowledge, और sometimes आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिससे आप पूछ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कोई आपको बंदा कहे कि ये ऐसे कर लो तो कर ले. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन यू मस्ट हैव 3 एडवाइसर्स, 2-3 एक्सपर्ट्स. जैसे कहते हैं ना कि सीरियस मरीज हो तो 3 डॉक्टर्स से मशवरा करना चाहिए. इट्स द सेम. क्रिएटिव थिंकिंग कम्स आउट when the people make careful observation of the world around them, then investigate the way things work. So your observation must be strong. While working something, you must watch in around. So ultimately your data and your mind is gathering. So if you, ये सेम रास्ता है, एक सड़क पे 2 बंदे जा रहे हैं, उससे पूछें एट द एंड ऑफ रोड, एक से पूछे यार रास्ते में दरख्त कोई था, एक कहेगा यार मैंने गौर नहीं किया. तो सेकंड आदमी कहेगा यस देयर वर 3 ट्रीज, वन वाज ऑफ द मैंगो, वन वाज ऑफ मीन ऑरेंज एंड वन वाज ऑफ एनीहो avocado something. So this is the difference of the creative person and normal person. So that work, your investigation becomes strong when your observation is strong. And next is the transformation. Involves viewing both the similarities and differences among the information collected. As I discussed already, you may get different information, maybe the 70% same and 20% different. If it is so, you are the judge. Then if you have your own viewpoint strong, you can find which one information is more suitable and more informative, more valuable, and can be the deciding, can be the game changer of your product, your industry. 2 types of the thinking are required: convergent, the ability to see the similarities and connections among the various and often diverse data and events. And divergent mean ability to see the differences among various data and events. So it's a 2 different things कि आपने उसको दोनों में ही एक है मरकूज करना, एक एक्सपैंड करना. So if you have both observation, so you can be a good creative. Transformation, how can you transform information into the purposeful ideas? बहुत से लोग होते हैं, जब उन्हें पूछे वो कहते हैं मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता. उसको कहो कुछ करते नहीं हो, तो वो they have the weak decision power. उनके पास सारों की सक्सेस की कहानियां होती हैं, अपनी कोई नहीं होती. वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करते. कई जिंदगी में आपको बच्चे मिलेंगे, मुझे भी जिंदगी में कई लोग मिले, वो दूसरों की कहानी सुनाते, वो ये मेरे सामने अमीर हो गया, वो इसने ये कल ये फ्रूट की दुकान लगाई थी, तो आज इसने प्लाजा बना लिया. ये भी हमारे सामने चाय का इसने डब्बा खोखा लगाया था, नो ये होटल का ओनर है. वो सिर्फ कहानियां सुनाएंगे दूसरों की, खुद. सो
पर्पसफुल आइडियाज में कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन को, दिस इज grasp the big picture by looking the pattern that emerge. So आप में ये ability होनी चाहिए कि आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके बड़ी पिक्चर बना सकें, मीन स्मॉल आइडिया से बड़े आइडियाज में कन्वर्ट करें, रास्ता बना पाए कि ये इस तरह का है तो फ्यूचर में ये होगा. How you can do that? If you have some observation, you have the previous data. Rearranging the elements of the situations. में ये वो जो गेम होती कौन सी थी जो खेलते हैं, चेस. मीन चेस, rearranging the elements of the situation. प्रॉब्लम आया, सिस्टम है, लाइक हर वक्त कोई बंदा आपको नहीं बताने वाला होगा, लेकिन sometime you have to decide. You are going on रोड, आपने डिसाइड करना है कि मैंने रुकना है, कहाँ रुकना है. समटाइम्स आपने कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप फिर उसके साथ कुछ और डिसाइड करते हैं. नोबडी विल लेट यू नो कि क्या करना है, वो तो सिस्टम आपके साथ हुआ. ऑलवेज अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपका डिसीजन भी अच्छा होता है. तो जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं नॉर्मली दे आर गुड मैनेजर्स. सॉरी बेटे, मेरा टी टाइम है, साथ साथ वो भी करूंगा. इजाजत है ना? चलें, थैंक यू. बात यह है कि यूज सिनेप्टिक्स, taking two seeming non-essential ideas and combining them. So different चीजों को sometimes ये इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि look in the course, in similar situation one liar win the case and in similar situation another liar lose the case. तो सेम केस में very similar. So success rate of your life gives you the information, how you collect the information and combine them for the success. Remember that the several approaches can be useful, successful. If one fails, jump to another. Always 2-3 decisions in back in mind. आपने एफएससी कर ली, ठीक है यार, केमिकल में दाखला हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैकेनिकल में सही, मैकेनिकल में भी नहीं हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी में ले लूंगा. यू शुड नॉट बी स्ट्रिक्ट टू द एनीवन. आप लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, आपने वहां रहना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. आप बिजनेस के लिए निकले हैं, आप कहते हैं यार आई विल डू द बिजनेस. ऑनेस्टली मुझे 3 बच्चे आए ना, दिस इज अ पीक सीजन. मैं इसी एंटरप्रेन्योरल की एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट में चाहता हूं कि ऑनलाइन मैंगो की बुकिंग करेंगे. एक अकाउंट चाहिए, 4 बच्चे आ जाएं, उसका बेहतरीन सिस्टम, जब लोगों को अच्छा मैंगो उनके घर में पहुंचना चाहिए. नॉट इन रहीम यार खां, ऑल ओवर द पाकिस्तान. दिस इज द आइडिया. माई टीम विल हेल्प यू and only your duty is the customer care. It's just the new, you can get orders online. One condition, you will get the money in advance, and then the university will secure if within 3 days order is not delivered, money will be back with the 10% increase. If one fails to jump, I mean one idea nakam hai to dusra. This is one idea. Another. So let's start with the South Punjab organic fruits. Organic fruits. RYK mangoes. So you can take any name of this product. Next is the incubation. So no,
I give one idea, transformation is there, data we have. Now we want to incubate the process, incubate the development of this after main process. जैसे मैंने कहा कि ये मैंगो का है, तो स्टार्ट द ऑर्गेनिक फ्रॉम ओन फार्म्स, उसका कोई नाम रखें, इंक्यूबेट करें और इम्प्लीमेंट करें। और मैं कह रहा हूं कि इसी महीने में आप अपने ग्रुप बनाएं। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था हर बंदा एक एक बिजनेस करे, उसके रिजल्ट क्या आते हैं उसकी हम बुक पब्लिश करेंगे, व्हाट्सएवर आर द रिजल्ट्स। अगर इसमें 20% लोग भी कामयाब होते हैं तो बाकी 80% को जॉब दे देंगे, आई एश्योर यू। अगर जिस बंदे को डर है ना कि मेरा बिजनेस बैठ जाएगा, मेरे साथ आए, मैं उनको हेल्प करूंगा, मैं उनके साथ उसको मैं 20% में मैं उनके साथ आता हूं, मेरा पैसा जाया होगा तो आपके साथ हो जाए। सो कितने लोग हैं जो अभी इसी मंथ इसी वीक ये मैंगो का या कोई और बिजनेस कर रहा है? जी ठीक है। सो आप कमेंट्स में लिखेंगे और इसकी हम बिजनेस पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने से नहीं आता, ये करने से आता है। We will gather the money, we will make some policy of marketing, we will do some deliveries. Ultimate objective is कि आप लोग ऐसे बिजनेस में आए जिसमें थोड़ा टाइम लगा के कुछ पैसे कमा के अपनी जिंदगी गुजारें। Allow your subconsciousness to reflect on the information collected. If you are confident that जो information है ये बिल्कुल ठीक है, I assure you उसके बाद आप स्टेप लेंगे तो आप बिल्कुल स्विम करेंगे। अगर आपने स्विमिंग की पूरी ट्रेनिंग की है तो स्विम कर जाएंगे, और उसके बाद एक्सपर्टीज कंटिन्यूस उस काम में पढ़ने से आएगी। वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, टेक द टाइम टू डे ड्रीम्स। रात को तो सब लोग ख्वाब देखते हैं, दिन को देखो, और देन टू मटेरियलाइज देम, देन बी एक्चुअलाइज देम। अपने ख्वाबों को अपनी प्लानिंग के थ्रू ऑपरेशन से उसको ठीक करें। ये आपके पास अपना पूरा फैसला करने का हक है। मटा दो अपनी हस्ती को, अगर वो कुछ मर्तबा चाहिए, दाना मट्टी में मिलके ही गुलो गुलजार होता है। इफ यू वांट टू डू समथिंग you have to work hard, you have to come out of the comfort zone. You have to spend 4 hours for your business along with your studies. Everybody has 24 hours in a day. Okay, 7 to 8 hours for sleeping, 6 hours for university, 14 hours. Again, 10 hours you have. Spend 3-4 hours on your study, remaining 2-3 hours on your smart business. Relax and play regularly. Whatever you want to do with attention, with regularity, with fully focused, you will be able to develop your business, flourish your business. Dream about the problem or opportunities. Always there is the problem, there is opportunity, there is a weakness, there is a strength, there is opportunity, and you have to shift the weakness into opportunity, weakness into strength, and opportunity, threat जो है उसको opportunity में convert करना। There is no free lunch in the world. You have to earn the money to buy or to purchase the lunch. ये अम्मा कब तक, अब्बा जी कब तक देंगे आपको? No, this is not true. If you have
The age of 18, you have to earn. You have to work for you. You have to create such environment that you have the minimum impact on your family, on your parents. Be independent. Be work with the family. Work on the problem in the different environment. Sometimes problem is same, environment is different. Sometimes different problem and again different environment. So how to tackle the problem is important. So I think so. You will able to analyze the problem for its solution. Then is the illumination. Illumination, what it means, this phase of the creative process occurs at some point during the incubation stage when spontaneous breakthrough causes the light bulb to go on. जैसे मैंने कहा कि आप साइकिल चलाने की आपने 20 मीटर चलाया गिर गए, 15 मीटर चलाया गिर गए, ऑल ऑफ डे एक टाइम आया कि आपने आधा किलोमीटर चलाया, आप बहुत खुश होंगे, या टुडे आई फील मोर एक्सपर्ट देन प्रीवियस। रिसर्च कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन रिजल्ट नहीं आ रहे थे, एक दिन बहुत पीक रिजल्ट आ गए। आप ट्राई कर रहे थे कि यार ये लाइट, इट्स द आउटकम फ्रॉम योर हार्ड वर्किंग। सो illumination is, so illuminating the bulb or light or the tube light mean giving something from input to the output, current into the light. So current into the light mean your process of converting the one raw material into the product. Illumination step occurs can be deceiving, making the process appears to occur much faster than it actually does. Sometimes ये जो conversion of raw material into product illumination है, again at every step you need some investigation for the true results, for enhanced results, for enhanced yield. So the system can be commercialized. Then is the verification. Validate the idea as accurate and useful. जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी थी, example was that you have to validate कि जो आपने काम किया है, what is offered is true, is fruitful, is useful, is accurate, is validated by the scientific community. आपने एक सीट थे, is it really a better solution? Will it work? Is there a need for that? If so, what is the best application of this idea in the marketplace? So it's your product, your idea. आपने ही लोगों को बताना है कि ये आपके काम की चीज है, आपने ही उसकी मार्केट करनी है, आपने ही लोगों को इम्पोर्टेंस बताना। अगर मार्केट में कभी गए हो, यहाँ मार्केट का ट्रेंड ऐसा नहीं है, सीधा का सीधा टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है और उसमें बताया जाता है हाउ दिस इज अट्रैक्टिव। कोई फूड प्रोडक्ट हो या कोई सैंपल्स हो तो मार्केट में गली मोहल्लों में वो सैंपल दे के उसको टेस्ट करवाते हैं, यस दिस इज। और कभी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो मे भी किसी एक कंपनी की मार्केटिंग के सेल्स पर्सन जो हैं, मेल और फीमेल, वो आपको अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में उसको एडवर्टीज कर रहे होते हैं, प्लीज बाय दिस, दिस हैज दिस बेनिफिट। सो इट्स योर आइडिया, you have to make it more successful. I mean, definitely what they ask, is it accurate? Is it really work?
Is this need to me? तो ये सारी चीजों का जवाब आपके पास होगा तो you will be a successful scientist. Does this product or the service fit into our core competencies? Again, before going to investigate something, before going to for business, there should be some need in the market. अब मुझे किसी ने एक दिन पूछा, यार इमरान खान मैं कॉफी का बिजनेस शुरू करने लगा, सेकंड कप और ग्लोरिया जीन या एनी अदर. तो मेरा पहला सवाल था कि यार इन साउथ पंजाब a lot of high temperature is there and 8 to 10 months are of the summer and 2 to 4 months are winter. So how this will help? Is there real need of the coffee? Is there people are addicted? So similarly, before launching your product, you must ask the question and market need. How much will it cost to produce or to provide? So your financial analysis, feasibility analysis must be complete before launching. What is the cost of the single item and at what rate you will sell, and is it affordable to the public? Can we sell it at a reasonable price that will produce a profit? Is it profitable, sustainable project? Will properly buy it? Will people buy it? Yes or not? That must be answered by you. Last but not least is the implementation. The focus of the step is to transform the idea into reality. We prepared this product and the market in reality will buy it or not. So market-based product, market-driven product must be launched. An entrepreneurial philosophy is ready, aim, fire. Not ready, aim, 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 aim. If you are ready, आपका aim and then to go. 1, 2, 3, fire. So you have to start. If you start your business today, after 1 month, the life of your company will be 1 month. Sometime ready, aim, 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 aim. हम अक्सर तो पूछते हैं यार क्या कर रहे, यार मेरा एक इरादा है, यार शादी कब करनी, यार इरादा है, बिजनेस कब करना है, बस इरादा है. ऐसा नहीं है. You have to plan and get hurry to start your business. Being entrepreneurial, this is perfect time to start the business. Why this is perfect time? Your expenses are less. Mostly you are not married now. You don't need a VVIP hotels to stay. You can spend a night in very low price hotels. You don't need to travel and need car to travel from one city to another city. You can travel through local bus, local transport service. You don't have kids. You don't have rental house. So this is right time. You have minimum expenses. You can live within a jean. You can wear any shirt. No need of the costly dress. So this is the perfect time to start the business in a university as a university student. You have market. Many your friends are around you to tell you. Many teachers are ready to guide you.
Otherwise, when you will not be student, nobody will allow you to enter in the university. Perhaps you got some connection with the teacher, you get some time from the teacher as a consultancy or from the other. You don't have market to advertise your product. Now in the university you have 12,000 plus students, 600 plus employees. But when you will not be the student, now we are owning that you are the student of this institution. So we are promoting you, your product will be successful, that success goes to your department. After that, this much audience will not be available for you, maybe. Now, enhancing the creativity. This was the creativity process. Now, if this is how to polish, how to improve the creativity. Include creativity as a core company value. Hire for creativity. Definitely, you have to make some training, some workshops for creativity enhancement. Creative and organizational structure that nourish the creativity, embrace diversity, expect creativity, expect and tolerate failure. So there's no 100% success. Sometimes success is there, sometimes failure is there. So again, if you do a smart decision, if you get some proper consultation, maybe the chance of failure is increased or maybe decreased. Incorporate fun into the work environment. Instead of stress environment, you have to some lights, games, or sometimes of the tours with the company. Encourage the curiosity. You must be always be insistent to improve the quality of the product. Design a workspace that encourage the creativity. View problem as opportunity. Provide the creativity training, provide the support, develop a process for enhancing the creativity. Talk and interact with the customers, get real feedback, reward creativity. Some creative persons, किसी ने अच्छा काम किया है, he must be paid, he must be given some certifications. Model creative behavior, monitor emerging trends and identify ways your company can capitalize on them. So you must identify such persons, and emerging trends must be referred and monitored. Look for users for products or the service in other markets. So never be. Oh. Okay, one. ये क्यों नहीं खत्म, ये खत्म हो जाएगा? हाई कर दें. Yes. Sorry. Don't forget about the business model innovations. Business model mean always run the business with the innovations. Today is product in the market. Mean business tycoons कहते हैं कि you have always 2-3 business. One business will go up, second will down, and maybe the third you have to balance. So always creativity. Nokia is not in the market today, but the Nokia started business in the mobile market. What happened?
they were unable to bring the innovations like other cell phones. उन्होंने इसको सॉफ्टवेयर बेस या पीसी बेस बनाने में नाकाम रहे. And today know where Nokia is. Enhancing organizational creativity, factors that contributes to the company's ability to evolve. Retaining the great talent. अगर जो अच्छे इनोवेटिव लोग हैं उनको आप रिटेन करेंगे तो 77% आपकी क्रिएटिविटी एबिलिटी टू इनोवेट द थिंग्स रहेगी. रिक्रिएटिंग द गियर टैलेंट 72%. टैलेंट है लेकिन उनको आपने गियर अप करना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको ऐसी एनवायरनमेंट देनी है कि वो 72%. डेवलपिंग न्यू बिजनेस प्रोसेसेस. वो कंपनी जो नए प्रोसेसेस डेवलप करती हैं, इनोवेट करती हैं एग्जिस्टिंग को 72% उनकी जो फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के प्रोसेस. create an environment in which it is acceptable to fail. Even if somebody has some mistake, failures, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो 61% ये भी कंट्रीब्यूट करता है. बहुत से लोग अगर आप बहुत ज्यादा फियर करेंगे कि किसी से गलती हुई तो ये पनिश होगी, वो फिर क्रिएटिविटी नहीं करते. सो यू मस्ट एक्सेप्ट जहां काम होगा वहां गलती भी होगी, तो आपको स्टेप लेना चाहिए. तो जो होता था ना, गिरते हैं मैदान शाहसवार मैदान जाल में, तो जो शाहसवार होगा, जो स्विमर है वही पानी में डूबेगा. तो हमें इसलिए स्विमिंग नहीं छोड़ देनी चाहिए कि इसने डूबने का खतरा है. सो वी मस्ट हैव टू स्विम. कोलैबोरेटिंग विद द राइट बिजनेस पार्टनर्स. कहते हैं जी किसी के साथ पार्टनरशिप पाकिस्तान की कहावत है, नहीं, लेकिन राइट बिजनेसमैन के साथ पार्टनर करें. हु इज राइट? नो, दिस इज एन एक्सपीरियंस, दिस इज परसेप्शन and this must be discussed. आपके SOPs क्लियर होने चाहिए. तो so right partner must be. तो in a lighter mode, right partner यहाँ ढूंढने के लिए सदियां लगती हैं, तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी पता नहीं कितना लगेगा टाइम. नीचे है जी के इन्वेस्टिंग ऑन द रिसर्च 31%. पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज रिसर्च पे नहीं इन्वेस्ट करती, लेकिन वो सीड की कंपनीज रहीम यार खान में जो अपने बीज तैयार करती हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल. अलाउ योरसेल्फ टू बी क्रिएटिव. आप भी क्रिएटिव होना चाहिए. ओनर को फॉरगेट द रूल्स, गिव योर माइंड फ्रेश इनपुट एवरी डे. सो आपको फ्रेश इनपुट को मिलनी चाहिए. टेक अप ए हॉबी, ट्रैवल एंड ऑब्जर्व. आप जब ट्रैवल करते हैं यू लर्न मेनी थिंग्स. ऑब्जर्व द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ other companies, especially those in completely different market. Recognize the creative power of the mistakes. Creative power of mistakes जो है ना वो भी होनी चाहिए आपके पास. Notice what is missing. आपको observe करना चाहिए कुछ चीज मिसिंग है, उसको add up. How to add up? Look for ways to turn trash into treasure. Waste to the energy, वेस्ट टू द प्रोडक्ट. कि आप सोचें कि ये बेकार चीज जो है उसको मैंने कारआमद कैसे बनाना है. टर्न ट्रैश का मकसद है कि जो वेस्ट है, नॉर्मली वेस्ट हैज नो वैल्यू. व्हेन यू मेक इट वैल्यूएबल यू विल अर्न मोर. आज भी मैं कहता हूं कि शहर का जो वेस्ट है, शहर का जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का और फ्रूट की दुकानों का वेस्ट इकट्ठा कर लें, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें, पैक करके बेचें, यू विल अर्न मिलियंस.
No need to do any job. Keep a journal handy to record your thoughts and ideas. आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जब कोई आइडिया आए, कोई ख्याल आए तो वो लिख लें या किसी को मैसेज कर दें ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए और उसमें आपको बेहतरी आ सके। दोबारा से वो आइडिया अभी आया तो कई लोग कहते होंगे यार मेरे जहन में एक चीज आई थी भूली हुई है, तो अगर आपने रिकॉर्ड किया हो तो वो मिसिंग कम हो जाएगी। लिसन टू द अदर पीपल्स, यू हैव टू लिसन। मसाइल हैं लोगों के, प्रपोजल्स हैं। लिसन टू द कस्टमर, गेट एडिक्वेट स्लीप। 6 से 8 घंटे जरूर नींद लें, कम नींद से भी आपके मसाइल बढ़ते हैं। वॉच ए मूवी, मूवी से भी क्रिएटिवनेस आती है। टॉक टू द चाइल्ड, डू समथिंग ऑर्डिनरी इन एन अनयूजुअल वे। Keep a toy box in your office. This is important. I mean, you are big, but the toy box mean koi khilona. Sometimes I take it, it's just the out of box things. I mean, sometimes some visitors are coming in your office. A toy box is there. Kids can play. You can play even in agar farag awqat mein, spare time. You sometimes memories, sometimes you spend few minutes to be fresh, to come out from the office environment. Take note of your pain points. So आप उनको नोट करते जाएं, जो भी अच्छी बुरी चीजें हैं. Do not throw away seemingly bad ideas. उनको भी कलेक्ट करें, बुरी चीजों को. कोलैबोरेट विद अदर्स, दूसरों से. जाहिर है कोलैबोरेशन से यू लर्न ऑलवेज. somebody has strength, you have some strength. When both strength will join, more power will come to you. So 1 is 1 and 2 ones are 11. So it's 1 plus 1 नहीं होता, 1 sometimes multiply करता है. So not be a plus, be a multiplier. Read books on stimulating creativity or take a class on creativity. हम कोशिश करते हैं क्रिएटिविटी वाली किताबें आपको दी जाएं, मूवीज दी जाएं, जो देख के आप में क्रिएटिविटी. एक दिन पूरी क्लास ऐसी एक फैसला करें कि बैठेंगे आप क्रिएटिविटी पे. एक वीकेंड पे यहाँ मूवी चलाते हैं, सारे स्टूडेंट आके जी इसका अरेंज करें, ले देखते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना करना चाहते हैं. तो इसी तरह छुट्टियों में जाएं, शुमाली इलाका जाएं, घर से बाहर जाएं, जो भी काम करें, बी परसिस्टेंट, बी कंटिन्यूस. मैंने एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा, इट्स नॉट गुड. दिस इज ऑल डियर. So if people have any question, you can send inbox or message comments and we will answer to you. So last take home message is that give us one company, and by every 5 student must have registered one company. Okay, thank you. Allah bless you all.